पता है मैंने वीर ज़ारा भी थिएटर्स में पहली बारी देखी अबाउट लास्ट वीक और बहुत ज़्यादा रोना धोना हो गया था वहाँ पे थिएटर्स में जाकर के. काफ़ी मज़ा आया. शाहरुख, यंग शाहरुख ऑन स्क्रीन वाज समथिंग एल्स. हेलो एवरीवन, वेलकम टू किताबी कैबिन्स. मेरा नाम चारू है एंड टुडे आई विल बी रिव्यूइंग ऑल ऑफ द बुक्स शाहरुख खान हैज़ रिकमेंडेड. आई रिमेंबर रीडिंग इट समवेयर कि शाहरुख की लाइब्रेरी में अराउंड 20K प्लस बुक्स हैं एंड इट इज़ बियॉन्ड माई रीडिंग कैपेबिलिटीज़ टू जज हिम. But here's a little try at it. I will let you guys know कौन सी किताबें are worth your time or they are not, and what are my views about the books. So we will start with the first book, which is The Subterraneans by Jack Kerouac. Jack was a writer during the Beat generation. He's also the author of On the Road, which is one of his most famous books. And interestingly, Vaani from Ye Jawani Hai Diwani was also reading On the Road जब वो इधर उधर घूमने निकलता रहता था. This is one of my favorite books and let me sell it to you. If you're a beginner, तो this book might feel a little obscene to you in the sense कि sentences बहुत ही ज़्यादा choppy हैं. You won't even get कि ये sentence शुरू कहाँ से हो रहा है, ख़त्म कहाँ से हो रहा है. But it is one of my favorite books, so let me just sell the book to you. The book is about a writer who gets into an affair with a girl who is 10 years younger to him. The book is about their dynamics, their families, their inabilities to choose things, and moreover, in general, how people just cannot be decisive about what they want in life and how it ends up ruining their complete life. This is also a very short read. You can complete it in a day or two. And also you will find a subtle layer of misogyny throughout the entire book. But I don't think Beats were the best people when it came to talk about feminism as well. So we will let Jack go यहाँ पे. शाहरुख ने अपनी कलेक्शन में हैरी पॉटर, रोल्ड हल और चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री के बारे में बात की है. And which completely makes sense because he's such a charming man and there is something extremely warm about people, adults who read children books. Maybe it's is where the charm is coming from. The next book we have is Refusing Heavens by Jack Gilbert. हमारी कलेक्शन में एक और जैक आ चुका है एंड ही इज अनदर वन ऑफ माई फेवरेट राइटर्स. इट इज अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज. जैक राइट्स अबाउट लव, फैमिली, लाइफ. His poems are very tender and complete in itself. And one of my favorite from this collection was Tear It Down, all-time favorite. Another poetry collection we have is The Night Torn Mad with Footsteps by Charles Bukowski. देखा मैंने सोभिता, still can't get it right. सोभिता दुल्लेपाला की वीडियो में भी बोला था एवरी सेलिब्रिटी हैज़ चार्ल्स बुकाउस्की ऑन देयर बुक शेल्फ. मेरा चार्ल्स बुकाउस्की के साथ रिश्ता थोड़ा ज़्यादा ठीक नहीं है, बट देयर आर स्टिल अ फ्यू पार्ट्स of his work which I do like and appreciate a lot. And I'm sorry to break it to you, but शाहरुख की जितने भी किताबें हैं उसमें से 6 of them make it to the red flag list on BuzzFeed. But we do not care the red flag books की जो list निकल रही है because I honestly feel like reading is such a personalized experience. Read whatever you want to read. We on Kitabi Cabins are trying to make it a very safe place for everyone to read without any judgment. So be all the red flags that you want to be. Letting Charles Bukowski go now. The next book we are talking about is Why Men Don't Listen and Women Can't Read Maps. Very mixed feeling about the book. The book is talking about how men and women are biologically different. And I have no complaints against it because मेरे को लगता है Jordan Peterson has talked about it often कि हम सब लोगों को पता लग गया है and we have accepted the fact as well. But some things in the books just felt a little naive और इनका कुछ biological scientific proof backed up भी नहीं था. But was a decent read in all. Another book we have is 5 People You Meet in Heaven. I know people read this book and especially beginners के लिए ये बहुत ज़्यादा easily accessible है. And personally speaking, I think मेरे साथ में टाइमिंग की खराबी होगी यहाँ पे कि अगर मैंने 5 साल पहले पढ़ी होती maybe I would have enjoyed the book. But अगर आप beginners हैं, you can still go through the book. It is about a guy, Eddie, who was a maintenance worker and he dies. उसको heaven में जाके 5 लोग मिलते हैं who had influenced किसी ना किसी तरीके से, छोटी मोटी तरीके से, and he gets to know कि okay, मेरा भी कुछ पार्ट रहा है लोगों की लाइफ में. Overall, my experience as a reader wasn't as engaging as it should have been. So डिसेंट रीड यहाँ तक पे. तो शाहरुख की कलेक्शन में काफ़ी साई-फाई किताबें भी हैं हमारे पास. ही हैज़ रिकमेंडेड आई रोबोट बाय आइजैक एसिमोव, हिचहाइकर्स गाइड टू गैलेक्सी एंड अनदर साइंस बुक विच इज़ शॉर्ट स्टोरी ऑफ नियरली एवरीथिंग. आई लव बिल ब्राइसन. बिल ब्राइसन कैन मेक एनीथिंग वेरी फ्लूइड, वेरी एक्सेसिबल. बच्चे पढ़ सकते हैं, बुजुर्ग पढ़ सकते हैं. एंड सेम विद हिचहाइकर्स गाइड इन गैलेक्सी. एक्सट्रीमली विटी, extremely engaging, page turner किताब है. Anybody can complete the book, especially if you are a beginner. तो will
यू कैन ईजिली गेट इन टू द बुक यहाँ से. आई थिंक इतनी ही किताबें थी. आई जस्ट रैप अप यहीं पे. In all my experience with Shahrukh Khan's books is कि the books are extremely accessible and I think जो interviews जितने भी हैं ये काफ़ी पुराने हैं. We need more and new recommendations from Shahrukh कि और किताबें बताएं आप. And if you're a new reader तो आप सभी किताबों की तरफ से जाइएगा. I'm not saying कि कोई भी किताब अच्छी नहीं है because of course reading is a very personalized experience. Thank you for watching. Thank you for being here. Thank you for being kind and I will see you next time.